Good morning. Welcome to Vanik Smart Classes. आज आम डिस्कसन करवा आरआई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि एक्चुअली आरआई मेन परीक्षा रे आसीबो. फर्स्ट क्वेश्चन थिला जे इन एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड. इन एसेंशियल बिजनेस लेटर आर इंक्लूडेड. प्रथम ऑप्शन अछि डेट लाइन एंड इनसाइड एड्रेस. सेकेंड ऑप्शन है मेसेज. थर्ड ऑप्शन है सिग्नेचर ब्लॉक. फोर्थ ऑप्शन है ऑल द अबव. तो इन एसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड. एटा भी हे परबो, मेसेज भी हे परबो, सिग्नेचर ब्लॉक हे परबो, ऑल द अबव. तेनु एठी आंसर करबो ऑल द अबव. सब जांग ऑप्शन हे परबो. तो एठी आंसर करबो ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन ला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन. आ भितर कहा साज रे आमे मार्जिन चेंज करि परिया. देखो स्टैंडर्ड टूल बार के मार्जिन चेंज हे परिबो नाही. कहीं स्टैंडर्ड टूल बार शॉर्टकट कौन थाए ना न्यू, ओपन, सेव, सेव एज. तो एक्चुअली कोड चेंज हो ना पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स रे मार्जिन चेंज करि परिबा. पैराग्राफ रे हमें चेंज करि परिबानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार चेंज करि परिबानी. फॉर्मेटिंग टूल बार कौन चेंज करे ना फॉन्ट रिलेटेड कमांड्स. फॉन्ट रिलेटेड कमांड्स कौन ला ना फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन. ये जिनस आम कौन चेंज करना फॉर्मेटिंग टूल बार चेंज करें. तेणु पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स रे आम मार्जिन टाक चेंज करें. मार्जिन कहले कौन ना लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम मार्जिन. ये जदि आम चेंज करवा को फैसिलिटी चेंज करें ना ओनली पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स रे फैसिलिटी हमर अछि. सेति पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू यूज टू चेंज द मार्जिन. तो मार्जिन पे हम कौन चूज करें ना पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफॉल्ट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट्स. देखो एठी पूरा मेंशन कर देछि 2003 डॉक्यूमेंट रे अप टू 2003 एमएस ऑफिस रे जोड़ा कि हमर लेफ्ट एंड राइट मार्जिन केते थिला. तो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन थिला 1.25 इंच. बट नाउ 2007 ऑनवर्ड्स रे लेफ्ट एंड राइट मार्जिन अच्छे केते ना 1 इंच. तेणु पूरा मेंशन करिथिबारु इन वर्ड 2003. तो सेति पई हमें आंसर चूज करबा 1.25 इंच. जदि किसी भी मेंशन न करि थांदा खाली लिख थांदा इन वर्ड डॉक्यूमेंट एटा काटी थांदा खाली लिख थांदा वर्ड डॉक्यूमेंट सेठी हमें आंसर कर थांते 1 इंच. जेहेतु टोटलिटी मेंशन कर दे इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट तो आंसर करेगा 1.25 इंच. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ला व्हाट वाज द डिफॉल्ट टॉप एंड बॉटम मार्जिन एमएस वर्ड 2003 रे. तो एमएस वर्ड 2000 रे टॉप एंड बॉटम मार्जिन केते थिला ना 1 इंच थिला. टॉप एंड बॉटम मार्जिन हला 1 इंच. नुवा वर्जन भी सही 1 इंच. जदी हमें अप टू 2003 जाके जीवा सेठी पाइबा 1 इंच. 2007 ऑनवर्ड्स को जीवा सेठी पाइबा सही 1 इंच. तो एठी हम राइट आंसर कोन करे ना 1 इंच. what is the use of control plus key. control plus equal to माइल एक्चुअली कौन हम ना कंट्रोल प्लस इक्वल टू से जो ऑप्शन देछि साडा तो हबनी कना सुपरस्क्रिप्ट शॉर्टकट हैला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू और तक कोन कंट्रोल प्लस प्लस. तो एठी हम आंसर करियो द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस की इज बेसिकली यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट. तो आंसर करियो सबस्क्रिप्ट. एटा जदी कहबे ऑल कैप्स हबनी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए ये ऑल कैप सब जगह बड़ा हो कंट्रोल शिफ्ट ए माइले. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट. आमे चाहूचे जे फॉन्ट साइज को इंक्रीज करिया पई सिलेक्टेड टेक्स्ट को इंक्रीज करिया पई अवश्य किछि मेंशन करनी जे इंक्रीज केते फॉन्ट करिवो 1 इंच करिवो
सॉरी 1 पॉइंट करिवो कि 2 पॉइंट करिवो जदि 1 पॉइंट अच्छी ताल आंसर करिबा कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट लिखि दउछि तुम मानु कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट it increase font point wise जदि कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करिया डिक्रीज फॉन्ट पॉइंट वाइज जदि यूज करिबा कोन ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन it increase font 2 point wise जदि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन यूज करिबा it decrease font 2 point wise तेणु एक्चुअली एठर आंसर होची लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट हबनी कारण लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट ला डिक्रीज पाए जेतु इंक्रीज पाए देचे आंसर हबो कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट एटी ऑप्शन देछि हमें रिप्लेस टेक्स्ट करियो चाहिबा दे कोठ हमें रिप्लेस टेक्स्ट करि पारा सेदी कंट्रोल आर शॉर्टकट होची राइट अलाइनमेंट पई यूज करा जाय तो आ द्वारा हेई परिबा नाही कंट्रोल आर फॉर राइट अलाइनमेंट कंट्रोल एच कौन हो ना रिप्लेस ओनली रिप्लेस पाई यूज करा जाए नल फाइंड एंड रिप्लेस पाई भी यूज करा जाए और कौन करबा ना रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम एडिट मेनू ये भी ट्रू अच्छी कारण एडिट मेनू ने रिप्लेस ऑप्शन अच्छी एडिट मेनू ने भी रिप्लेस ऑप्शन अच्छी कहीं ना एटा 2003 वर्सन थिबारु अप टू 2003 सेथरा हमर एडिट मेनू फैसिलिटी थिला तो एडिट मेनू ने रिप्लेस बॉक्स थिला तेटु एठो आंसर करिया बोथ बी एंड सी दुईटा ऑप्शन सहाय्य रे आमे रिप्लेस टेक्स्ट करि पारिबा तो आंसर हैला बोथ बी एंड सी व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड जदि आमे कोन करिबा माउस को रीड करिया कोन एक्चुअल हुए ना जदि आज सिलेक्टिंग करा जाए तो हाइलाइटिंग करा जिवो जदि हमें ड्रैग करले तो सेति पे ना हला तारा ड्रैगिंग तो एठी आंसर कोन ना ड्रैगिंग तो माउस कैन मूव द माउस अराउंड द स्लाइड दैट इज ड्रैगिंग in PowerPoint this is a container for text or graphics PowerPoint रे टेक्स्ट ग्राफिक्स कंटेनर आमे कहा को करि परिबा ऑप्शन दै छी स्लाइड मास्टर को करि परिबा कि प्लेस होल्डर ना टेक्स्ट बॉक्स ना कोठी हमें ए जो बोथ टेक्स्ट और ग्राफिक बहुत सब इंसर्ट करि पारे जदि आसन था स्लाइड रे हमें टेक्स्ट और ग्राफ बोथ आर इंसर्ट करि पारे ओडी स्लाइड न थी पर एटी कोन ना टेबल ले भी हम दीटा ऑप्शन यूज करि पारे टेक्स्ट और ग्राफिक दीटा को इंसर्ट करि पारे तो आंसर एटी कोन ना टेबल Which key deletes text before or left of the insertion point? देखो which key is delete text before or left of the insertion point? Insertion point पूर्वरु left of the mouse insertion point किए करि पारे ना left पाई किए करे ना backspace करि पारे और right पाई किए करे ना delete करि पारे which key deletes text before or the left of the mouse insertion point? तो एठी बेसिकली आंसर करे ना डिलीट की रो फैसिलिटी अछि जदि तुमे सेलेक्ट करि डिलीट करि पारे न डिलीट जनरल क्लिक करले राइट साइड टू डिलीट हबो जदि एठी पेज डाउन ऑप्शन है बोथ ए एंड सी था तले भी हम आंसर करथांते बोथ ए एंड सी तर ए फैसिलिटी भी अछि सी भी फैसिलिटी अछि तेनु बोथ ऑप्शन न थिबारु प्रायोरिटी बेसिस रे का को नबा ना डिलीट की टू स्टार्ट एमएस पावरपॉइंट एप्लिकेशन आमे चाहो ना पावरपॉइंट एप्लिकेशन को ओपन करबा खूब फैसिलिटी साहाय्य केमिति ओपन करि पारिया देखो
क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू क्लिक करवा प्रोग्राम्स रे क्लिक कर ऑल प्रोग्राम रे क्लिक कर एमएस पावर पॉइंट रे ओपन करि पारिबा सी देछि हिट कंट्रोल आर जेतला में क्लिक करवा द टाइप्स पावर पीपीटी इमति किछि एक्सई फाइल नाही कारण जनरली पावर पॉइंट रे एक्सई फाइल होछि पावर pnt.exe पावर pnt.exe एटा होछि एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर पॉइंट रो फाइल तो एई केमते ओपन हबो ना क्लिक स्टार्ट मेनू स्टार्ट रे क्लिक करिवो रन देन टाइप पावर पॉइंट ई जो लिखि छि पावर पॉइंट ए फैसिलिटी द्वारा हम ओपन करि पारिबा नाही ऑल द अबव तो केबे भी होबो नाही कारण तीनटा ऑप्शन भूल हेलानी माने ऑल द अबव होनी तो फर्स्ट ऑप्शन कोन अछि ना क्लिक ऑन स्टार्ट प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम देन एमएस पावर पॉइंट जदी एठी थांदा ना तो क्लिक स्टार्ट रन द टाइप देन टाइप एई जगह रे थांदा ना कोन थांदा ना एई तांगे थांदा पावर पीएनटी यदि पावर पीएनटी थांदा ताले ओपन हेई पार थांदा तो ए जगह रे कोन थांदा ए ऑल द अबव नो थांदी बोथ ए एंड सी थांदा ताले बोथ आंसर हे थांदा किंतु ए जो फैसिलिटी नो थिबारो तो डायरेक्ट हम एक नंबर आंसर चूज करिया तो 11 आंसर ए कले ना पावर कोड जो ना स्टार्ट ऑल प्रोग्राम तापर पावर पॉइंट रे क्लिक करिया नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट एप्लीकेशन अलाउज यू टू प्रोड्यूस कौन हमको प्रोड्यूस करे ऑप्शन देछि एनिमेटेड प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन हमें चूज करिया से एनिमेटेड है कि देबो दैट इज आल्सो ट्रू कारण एनिमेटेड ही बाहर करि परिबा आ पेपर प्रिंट आउट ऑफ स्लाइड को हमें प्रिंट आउट भी बाहर करि परिबा आ नोट्स फॉर द स्पीकर आदरी फैसिलिटी अछि तो एठी आंसर कोन करे ना ऑल द अबव ये सब जहाँ फैसिलिटी थिबारो ए टाइप रे आंसर को हमें ऑल द अबव करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सबटाइटल द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सबटाइटल तो ये जो फैसिलिटी दीटा अछि देखो सच एंड टाइटल एंड सबटाइटल एठी अछि अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट करिया खेले कोन करिया ना हमें लेआउट ऑप्शन चूज करिबा आंसर है लेआउट कारण लेआउट रे दीटा फैसिलिटी अछि ना तुमे अरेंजमेंट करि पारे टाइटल प्लस सबटाइटल दीटा को हमें लेआउट साजर अरेंजमेंट करि पारिबा तो आंसर है लेआउट A dash is an additional set of commands that computer display after you make a selection. एक क्वेश्चन से आंसर होची ना डैश इज ए एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स कहा भीतर एक्चुअली सेट ऑफ कमांड्स था दैट कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक ए सिलेक्शन किछि गुडी सिलेक्शंस करि सारला परे ये आ भीतर का फैसिलिटी अछि जे कि हमें काम करि परिबा डायलॉग बॉक्स रे फैसिलिटी अछि ना नाही अछि सब मेन्यू फैसिलिटी अछि मेनू सिलेक्टिंग रे फैसिलिटी भी अछि तो आंसर कोन करे ना ऑल दी एबव आंसर काहे कि ऑल दी एबव करबा ना देइछि क्वेश्चन सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक ए सिलेक्शन किछि गुडी सिलेक्शंस करि परला जदी हमें कोन कले ना सेंटर अलाइनमेंट की जहां भी हमें करियर अछि गोटे टेक्स्ट को सिलेक्ट करले डायलॉग बॉक्स रे जाई कि करि परिबा सब मेनू जाई करि पारे अब मेनू सिलेक्टिंग जाई कि भी करि पारे ना चेंज करबे सेति पय आंसर हला ऑल दी एबव एनीथिंग रिटेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डैश जदि हमें स्क्रीन ने जनरली किछि लेखिले एनीथिंग रिटेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डैश ऑप्शन देछि कर्सर कर्सर नुहे कारण कर्सर हला कोन ना इट्स ए ब्लिंकिंग कैरेक्टर कर्सर हला इट्स ए ब्लिंकिंग कैरेक्टर व्हिच शोज द टाइपिंग एरिया इट्स ए ब्लिंकिंग कैरेक्टर व्हिच शो द टाइपिंग एरिया तो आ द्वारा केबे हेई परिबो नहीं आ जनरली एनीथिंग रिटेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड टेक्स्ट आंसर हला टेक्स्ट अब फोल्डर नो तो फोल्डर कोन ना फोल्डर हला ए स्पेस allotted for storing file a space allotted for storing file is called folder और आर गुड अल्टरनेटिव क्वेश्चन आसे केमती ना यू कैन ऑर्गेनाइज द फाइल्स
by storing them in a folder. तो आंसर केबे फोल्डर हवन सेति पे आंसर कोनला ना टेक्स्ट एनीथिंग रिटेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड टेक्स्ट जहाँ भी हमें रिटेन करछे सब जगह कोन करबा ना टेक्स्ट करि पारिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डाट्स लेट्स यू लीव ए स्क्रीन और प्रोग्राम आ भितर कहा सहाय्य रे ऑप्शन देछि लेट्स यू लीव ऑफ ए स्क्रीन और प्रोग्राम आमे चाहू जो गोटे स्क्रीन किंबा प्रोग्राम को मूव करिया पाए बा जीवा पाए सेति पाए बूट बूट तो केबे होबनी कारण बूटिंग और स्टार्टिंग रेकॉर्ड इनिशिएट करे आ प्रोग्राम सहाय्य तो हेई पारिबो नै आंसर ला कोन एग्जिट एग्जिट लेट्स यू लीव ए स्क्रीन और प्रोग्राम तो आंसर कले एग्जिट Next question is a dash is an icon on the desktop that provides the user with immediate access to a program or file. Immediate access means ना इमिति किछि ऑप्शंस डेस्कटॉप ऊपर थाए तुमे ताको आइदर डबल क्लिक कले शीघ्र तुमे ओपन करि पारियो काहे ना मेनू ड्राइव ने गले टिके लेट हुए तो सेति पई देखो कर्नेल द्वारा भी हेई पारिबो नाही कारण कर्नेल इज ए कोर program that present inside the OS का भीतर था ना ऑपरेटिंग सिस्टम भीतर था which manages all the functions of operating system so it is known as part of OS तेणु जेहेतु एटा तो केबे भी कहा पर नथिबो डेस्कटॉप पर नथिबो आ बफर सिमते किछि डेस्कटॉप पर नथिबो स्पूलर तो नथिबो कारण स्पूलर कोन ना इट्स ए स्टोरेज कंटेनर ऑफ ए प्रिंटर स्टोरेज कंटेनर को कोन कहना स्पूलर तो गोटे ऑप्शन बाकी रहला सेटा ला शॉर्टकट तो आंसर कोन करबा शॉर्टकट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएफ रो फुल फॉर्म कोन आरटीएफ रो फुल फॉर्म होच कोन ना rich text format ना rich text format ना right text font ना rich text font तो ये तीनटा ऑप्शन भूल हबो आंसर हबो rich text format RTF stands for rich text format next question the extension name of paint file is dash ना जो paint रे हमें फाइल तैयारी करबा paint file एला जोटा हमर ms paint rex फाइल हो p brush जदि हमें डिफॉल्ट जीवा अप टू 2003 पाखु जीवा अप टू 2003 जदि एमएस पेंट हमें ओपन करे डिफॉल्ट थाए .bmp फाइल bmp स्टैंड्स फॉर बिटमैप पिक्चर दे जोटी किछि मेंशन करनी अप टू 2003 विंडो की ऑपरेटिंग सिस्टम केते मेंशन करनी तो एक्सटेंशन नेम ऑफ पेंट फाइल इज तो जदि आगुर किछि मेंशन करथांदा तो बीएमपी करथांदा किछि मेंशन करनी .png हबो जेपीजी हबो बीएमपी हबो तने हल्दी हबो पीएनजी आंचो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स आर फुल फॉर्म जेपीजी रला जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप आर भी हमें लिखी पारिया .jpeg तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप तेणु एई जो विंडो रे एई जो एक्सटेंशन नेम ऑफ पेंट फाइल हमें ऑल द अबव करि पारिया .png रही पारियो .jpeg रही पारियो .bmp रहबा किंतु आली वर्जन ओनली कोन रहउतला ना bmp रहउतला डिफॉल्ट तुमे ताको चेंज करथलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन कैलकुलेटर हमें कैलकुलेटर केमती ओपन करिबा नो कैलकुलेटर ओपन करया पई स्टार्ट बटन ने क्लिक करियो ऑल प्रोग्राम में क्लिक करियो एक्सेसरी क्लिक करियो देन कैलकुलेटर एई टाइम प्रथम ऑप्शन ट्रू अछि दे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज कैलकुलेटर ना कैलकुलेटर ऑलवेज कहां अंडर थाए ना एक्सेसरीज अंडर रे थाए याउ स्टार्ट बटन ने केबे भी एक्सेसरीज अंडर रे डायरेक्ट न थाए तो स्टार्ट बटन ने केबे एक्सेसरीज न थाए स्टार्ट प्रोग्राम पर ऑल प्रोग्राम अंडर एक्सेसरीज थाए तेनु ए ऑप्शन हबनी ए ऑप्शन हबनी आंसर हला ए ऑप्शन Next question dash an easy to use interface to play digital media
Dash is an easy to use interface to play digital media file. तो डिजिटल मीडिया फाइल प्ले डिजिटल मीडिया फाइल आ भीतर को फैसिलिटी करा जाए देख वार्डपैड हूँ गोटे वार्ड एडिटर टा बाला वार्ड प्रोसेसर टा किंतु नोटपैड हूँ गोटे टेक्स्ट एडिटर तो ये दीटार केबे भी तुम्हें कोना डिजिटल ऑडियो प्ले करि परिबो नाही तो फाइनल आंसर कौन ना मीडिया प्लेयर इज फैसिलिटी टू ओपन दी इंटरफेस टू प्ले डिजिटल वीडियो बा ऑडियो नेक्स्ट क्वेश्चन डीएफडी स्टैंड्स फॉर डाटा फ्लो डायग्राम बी इज द राइट आंसर तो डीएफडी स्टैंड्स फॉर डाटा फ्लो डायग्राम data items grouped together to storage purpose are called as देखा data items grouped together for storage purpose are called as ऑप्शन देछि record ना string ना title ना list देखा ये दीटा ऑप्शन केबे हबनी कारण टाइटल आउ record बा टाइटल आउ string केबे भी हे परिबनी तो ऑप्शन होला दुईटा जदि एटा एक्सेस एमएस एक्सेस आसे तो आ भीतर कोन ना डाटा आइटम्स ग्रुप टुगेदर फॉर स्टोरेज दैट इज कोन ना रिकॉर्ड आंसर कोन ना रिकॉर्ड ना जोटा हमें कोन ने रिकॉर्ड स्टोर हे रहे तो सेति पे आंसर करले रिकॉर्ड रिलेशनल डाटाबेस आर डैश ओरिएंटेड तो रिलेशनल डाटाबेस आर की ओरिएंटेड ऑप्शन देछि मेथड ओरिएंटेड नुहे टेबल ओरिएंटेड आंसर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को प्रोग्राम ना एठी आंसर करियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कारण रिलेशनल डाटाबेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम relational database developer refers to a record as a dash a relational database developer refers to a record as a dash ऑप्शन देछि an attribute नुहे record को जनरली से कौन कहै ना टपल कहा जाए तो इन रेफर टू ए record as known as tuple तो एठी आंसर करिया टपल जदि एठी रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर रेफर्स टू ए टेबल करि थांते एठी आंसर करथा रिलेशन तो जेहेतु एठी टेबल ऑप्शन नाही record ऑप्शन अछि सेति पे आंसर करिया टपल तो आंसर ला बी हैला टपल Which one of the following is refers to a data about data तो data about data माने ता कोन कहा जाए देखो डायरेक्टरी तो केबे कहि परिबानी डायरेक्टरी डकी देली जदि हमें डॉस यूज करबा सेडला डायरेक्टरी विंडो यूज करले सेडला फोल्डर तो सब डाटा नुहे आंसर ला मेटा डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा एटा डाटा वेयर हाउस भी करि परिबानी काहे ना वेयर हाउस कोन ना इट इज द कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन it is the collections of information to regarding a database that is called data warehouse सेति पई data about data is called metadata next question la DBA stands for DBA माने dash is responsible for database management ताको दी DBA ला database administrator को DBA को आ जाए DBA stands for database administrator which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialog box एटी क्वेश्चन थला जे which of the following format you can decide to apply it's not a format dialog box आ भीतर को आंसर हमें चूज करिबा देखो which of the following format decide to apply auto format dialog box रे आ भीतर को फैसिलिटी किए सब अछि ना नंबर्स नाही बॉर्डर भी हां नंबर्स भी अछि बॉर्डर भी अछि फॉन्ट भी तेणु आंसर करना ऑल देबो ए सब जाय फैसिलिटी कोचन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स रे अछि
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू कैन चेक द कंडीशन एग्नेस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशन फॉर्मेटिंग। जेतला हमें एक्सेल ले कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करबा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करबा कोउथरे हमें करि पारिबा ना, सेल वैल्यू रे करि पारिबा, फार्मूला रे भी करि पारिबा। तो आंसर ला बोथ दी अबव। ए दीटा फैसिलिटी रे आंसर कोन करबा ना, बोथ दी अबव। ए दीटा फैसिलिटी अछि जे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रे बोथ हमें सेल वैल्यू नहीं पारिया प्लस फार्मूला ले पारिया। सेल वैल्यू ले डायरेक्टली हमें यूज करबा, किंतु फार्मूला रे स्टार्टेड विथ इक्वल टू सिंबल देखि जो जिनस हमें अप्लाई करि पारे से तरह हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पुट करि पारे। जदि हमें सब फर्स्ट क्लास डिवीजन को रेड कलर दवा को चाहूचे तो सेति पई लिखा इक्वल टू सेल रो ना इक्वल टू देकी कलर चूज करबा तो ऑटोमेटिकली हे जिवो। डबल कोड भीतर लिखो फर्स्ट, तापरे फॉन्ट को जाए कि कलर चूज कले तुम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हे पारे। जदि फार्मूला अछि एई भला तुमको लिखिया पड़ियो इक्वल्स टू सेल ना इक्वल्स टू जहाँ को तुम्हें अप्लाई करिया चाहो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से दिन डबल कोड भीतर लिखियो। कहीं डबल कोड भीतर लिखियो, एटा टेक्स्ट थिबारु डबल कोड भीतर लिखियो। तो लिख सारा पर फॉन्ट रे क्लिक करी कलर चूज करे, तापर ओके रे क्लिक कर, ओके रे क्लिक करे तुम कंडीशनल पड़ी जिवो। सेति पई ए वैल्यू रो आंसर हमें बोथ ए एंड बी करबा। When range is selected, how can you active the previous cell? Question देखो पड़ी ना, when range is selected, how can you activate the previous cell? Previous cell माने जदि हमें A2 रु A10 डाके ऑलरेडी हमें सिलेक्ट करछे तो आ भितरु A2 सेल को हमें केमती जाई परिया, केमती जाई परिया ना, जदि हमें ऑल्ट की करबा जाई परिबा नहीं, टैब की माइले सिलेक्शन रिमूव हे जिवो, एंटर की माइले सिलेक्शन कोन जिवो रिमूव हे जिवो। आंसर कोन करबा ना डी। एदर को फैसिलिटी इमते ऑप्शन नाही जे कि हमें प्रीवियस सेल को जाई परिया, सेते आंसर करिया नॉन देबा। टैप स्क्रॉल बटन्स आर प्लेस ऑन एक्सेल स्क्रीन। देखो टैप स्क्रॉल बटन आर प्लेस ऑन एक्सेल स्क्रीन एटा कोठी थाए ना, टुवर्ड्स द बॉटम मार्जिन कॉर्नर रे न थाए, एटा नई थाए माने एटा कोठी थाए ना, टुवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर रे थाए बसुदा। क्वेश्चन है देखो, each excel file in workbook that contains different sheet, which of the following cannot be a sheet in workbook? आ भितरु which of the following cannot be a sheet in a workbook? देखो excel contain workbook, workbook भीतर के थाए वर्कशीट, चार्ट शीट भी थाए, मैक्रो शीट भी थाए। तो आंसर करछे ना which of the following cannot be a sheet in excel। काहेकि ना देखो वर्कशीट, कारण वर्कबुक रो मेन पार्ट है कि वर्कशीट। जदि आमे किछि चार्ट इंसर्ट कले सेठी कोन पाइले चार्ट शीट, जदि आमे किछि मैक्रो इंसर्ट कले सेठी पाइले मैक्रो शीट। किंतु डाटा शीट न, काहे कि डाटा शीट न ना, जेतेले आमे एक्सेल किछि काम करिया से टोटल को शीट जनरली कोआ जाय ता कोनी डाटा शीट, किंतु एटा किछि डिफरेंट शीट न थाए। आंसर हैला डी ऑल डाटा शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट करेक्ट मेथड फॉर एडिटिंग सेल कंटेंट। आ भीतर जो एडिटिंग सेल कंटेंट अछि, एडिटिंग सेल कंटेंट माने ना, सपोज देखो एटा जदी सेल हुए एछि तुमे किछि लिखिला, सपोज एएलयू लिखिला, एएलयू लिखि के मु चाहू छी एएल को किछि एडिट करी, तुमे ऑलरेडी मूव करी सारी छ। तो एठी जदी किछि एडिट करी ता माने एठी मते कर्सर आसिला परे मु किछि लिखि पारिबी। तो आ भीतर को मेथड साहाय्य रे कर्सर ता भीतर को जाई परिबा नै ना। आदर तीनटा मेथड कोन अछि ना, प्रथम F2 क्लिक कले आ भीतर कर्सर आस परियो, फार्मूला बार जाई कर्सर आस परियो, डबल क्लिक कले कर्सर आस परियो। तेनु ए तीनटा रे कर्सर आसी परिबो, किंतु क्वेश्चन पचारछि द व्हिच इज नॉट करेक्ट मेथड। आंसर करबो ऑल्ट, ऑल्ट साहाय्य रे कर्सर आस परिबो नाही। एटा तीन प्रकार क्वेश्चंस पड़े। आ गुटे क्वेश्चंस पड़े केमते देखो, एटी व्हिच वन इज नॉट ए करेक्ट मेथड एडिटिंग ए सेल कंटेंट पड़थिबो, प्लस आ गुटे क्वेश्चन आसीबो कोन ना एटी व्हिच इज नॉट ए करेक्ट मेथड रीनेमिंग ए शीट, रीनेमिंग ए शीट। तो आमे जानिबा का मेथड सादरे हमें रीनेम करि पारिबा। तो रीनेम करिया पई कोन करबा ना, देखो फर्स्ट ऑप्शन ला राइट क्लिक,
sheet name, click rename, or double click on sheet name. sheet name ऊपर डबल क्लिक कले हमें रिनेम कर पारे और कौन कर पारे ना फॉर्मेट को जीवा sheet को जीवा तापरे रिनेम जेहेतु एटा ओल्ड वर्जन ना न्यू वर्जन रे कोन अछि ना होम को जीवो होम रो फॉर्मेट रो sheet रिनेम आ द्वारा भी करि पारे तो ए तीनटा ऑप्शन नो एक्स्ट्रा जोटा थिबो तमे ताको बाहर करि पारिबो प्लस आ गुडी क्वेश्चन कोन पड़े ना व्हिच इज नॉट ए करेक्ट मेथड accepting a data into a cell. Accepting a data into a cell. Now, question पड़े जे which one is not a correct method to accepting a data into a cell. ता माने cell तुम्हें लिखिला तो कौन कले टा accept आओ. First option enter की माइले accept है जो tap की माइले भी accept है जो null click on another cell. ये तीनटा मेथड छाड़े की यदि आउ को मेथड टा आसी थिबो ताको रंग बोली चूज कर दो. तो एठी हमें ऑल्ट को चूज कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स इन एक्सेल. You can merge the main document with data source in Excel in mail merge operation. What is as usual done? जदि हमें mail merge facility नबा जदि हम mail merge facility operation ने नेबा तो word को as usual कौन को आजिबो ना word को as usual client को आजिबो कहीं सर्वर कहीं कहबे ना सर्वर की रहला ना एक्सेल यूज गुटे बैकएंड पैकेज जनरली हमें डाटाबेस पैकेज को आ जाए तो डाटाबेस पैकेज हला सर्वर तो क्लाइंट को ना हमें जहाँ को इंटरैक्ट करिया जहाँ थ्रू रे को एक्सेस करिया ता कोन दी क्लाइंट तो आंसर हला क्लाइंट. स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड डैश. देखो स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज जोटा अछि स्टोर हुए ता को जाय ना फोल्डर तो को जाय नै फाइल भी कहबानी ता कहबा मेल बॉक्स इज ए स्टोरेज कंटेनर ऑफ ए ईमेल मैसेज. तो ईमेल मैसेज देखो फर्स्ट क्वेश्चन आसे जे स्टोरेज मैसेज आसी कोड स्टोर हुए ना मेल बॉक्स रे आ डिलीटेड ईमेल्स कोड स्टोर होबो ना डिलीटेड ईमेल्स से कोड स्टोर होबो ना ट्रास बिन. आ गुटे क्वेश्चन आसे व्हेन ए मैसेज इज नॉट रेडी टू सेंड इट इज टिपिकली स्टोर्ड इन ए डैश. जदी मैसेज सेंड बाय रेडी हेनी त टिपिकली कोड स्टोर हम ना सेटा यूज करे ड्राफ्ट DRAFT. आउ बेले बेले क्वेश्चन आसने अनसोलिसिटेड और जंकी मेल कॉल डैश सेटा करियो स्पैम. अनसोलिसिटेड और जंकी मेल कॉल स्पैम बेले बेले क्वेश्चन आसे अनवांटेड मैसेज आर स्टोर्ड इन डैश ना अनवांटेड मैसेज आर स्टोर्ड इन आल्सो स्पैम. आउ क्वेश्चन आसे ना बाउंस्ड ईमेल्स अकर केतेल ईमेल बाउंस होबा ना जदी इनवैलिड ईमेल आईडी ला बाउंस होबो इनवैलिड ईमेल आईडी. तो ये बड़ा केतोडे क्वेश्चन खाली का पर आसे ना ईमेल मैसेज ऊपर आसे तो एठिकार आंसर है हमर मेल बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द होम पेज ऑफ ए वेबसाइट. वेब पेज रो होम साइट कोन को आजना जनरली फर्स्ट पेज को आजे आंसर है फर्स्ट पेज. द होम पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड फर्स्ट पेज. Which of the following terms is not related to the internet? देखो आ भितरु कहा सहित इंटरनेट सहित लिंक नहीं जे which of the following is not related to internet. लिंक तो जनरल इंटरनेट रहिबो इंटरनेट मानेला इट इज द इंटरकनेक्टेड लिंक्स तो जेहेतु लिंक रही छे फैसिलिटी रहिबो नियाती किंतु क्वेश्चन अछि नॉट फंक्शन की ब्राउजर रिलेटेड सर्च इंजन कारण ए जो तीनटा रहिला तीनटा को इंटरनेट रे हम काम करि परिबा तो ब्राउजर तो नियत रहिबो सर्च इंजन रहिबो तो आंसर हला करना फंक्शन की इज नॉट अ टर्म रिलेटेड टू द इंटरनेट. आंसर ला फंक्शन की. इन computing IP address means this international pin नुहे इंटरनेट प्रोटोकॉल ला ट्रू इनवैलिड पिन नो की इंसर्ट पिन नो आंसर ला इंटरनेट प्रोटोकॉल. In computing, IP address means internet protocol. Right answer is internet protocol. Next question la the secret code that gives you access to some program is called dash. आमे इतले किछि गोटे secret code देई थाउ ता कोन को आ जाय ना clue नुए कि क्यू नुए ता को आ जाय password. तो secret code that gives you access to some program is called
पासवर्ड। ये थी सम इम्पोर्टाट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आरआई मेन एग्जाम। तो एथुरु बहुत किसी क्वेश्चन माने रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो, ताको प्रैक्टिस करबो। थैंक यू।